हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का द हिंदू डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस हम शुरू करेंगे। और आज के एनालिसिस में 25 अगस्त 2023 को बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं, चाहे वो टैक्सेशन ऑन द गेमिंग इंडस्ट्री हो या फिर हमारा ब्रिक्स का जो अभी समिट कंक्लूड हुआ है। On the parallel lines, PM Modi and President Xi Jinping have some talks about the disengagement on the borders. ठीक है, and there are some more important news coming from G20 perspective and African Renaissance. नॉर्दर्न सी रूट क्या है और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है वहां पे, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए। BRICS and is now expanded and there are non-Western. This is now a non-Western grouping with 6 more members. ठीक है, 5 से लेके अब ब्रिक्स के 11 मेंबर हो गए हैं। एंड देर इज एन आर्टिकल अबाउट ऑनर किलिंग ऑल्सो। तो सारे के सारे आर्टिकल्स हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और जैसे आपको पता है कि इस डेली न्यूज एनालिसिस में वी टेक अप वन PYQ, वी टेक अप स्टैटिक current affairs, static, PYQs for prelims and PYQs for mains। तो सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस हो जाती है, और सारी की चार चीजें हमारे इस डिस्कशन का कंपोनेंट होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट that with reference to ancient India, consider the following statements। पिछले साल इसी साल का क्वेश्चन है, 2023 की प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। that the concept of stupa is Buddhist in origin। तो स्तूपा का जो origin है, it's Buddhist in nature। Stupa was generally a repository of relics। Stupa is generally a repository of relics, and the stupa was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition। What do you think about this question, this statement? जब भी मैं बोलता हूं कि हिस्ट्री में जब भी आपको कोई स्पेसिफिक चीज पूछी जाए दैट दिस इज इट, ठीक है, या कोई एम्बिगुअस चीज पूछी जाए, तो जो एम्बिगुअस चीज होती है उसके चांसेस होते हैं ज्यादा करेक्ट होने के, और जो स्पेसिफिक चीज पूछी जाए उसके चांसेस होते हैं ज्यादा इनकरेक्ट होने के। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री इन यूपीएससी, एंड सेम इज द केस हियर। और अगर आप देखो तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज अ बिट लाइक स्तूपा was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition. Yes, it was. Stupa was generally a repository of relics. Yes, if you see that statement 2 is correct and statement 1 is not correct। ठीक है, क्यों? Because there is a specific and general thing, this specific point which has been asked about stupa, that is the origin of the stupa। or origin of stupa is actually mentioned in origin of stupa is mentioned in Vedas, as it was the king Varuna who first started building these stupas। Above the forest is a place having no foundation। Rigveda refers to the stupa which was raised by this king Varuna। ठीक है, and if you talk about the third statement of this question, third statement is correct because we have read it in our normal textbooks, that is the NCERT textbooks, that stupa was actually for the veneration, and it was a votive and commemorative this structure which was created during the Buddhist era. And Ashoka have, as it said, that he have built more than 1,000 stupas, and sometimes it's mentioned that he built more than 99 stupas, and the 9 are most important, okay, which you must remember। Now, there was this snapshot on the Hindu today about the Pragyan, which is the rover on moon, and it talks about the recharge battery, और प्रज्ञान की बैटरी का कितना टाइम होगा, प्रज्ञान की बैटरी कैसे काम करेगी, प्रज्ञान में स्पेस कितना है, स्टोरेज स्पेस कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो है उसका वॉल्यूम कितना है ना। वी डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस, बट यस, libs, APXS, and these are the two components, particularly these are the two components which are there on the Pragyan, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट्स करेंगे क्या। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन रेफर टू दिस स्नैपशॉट।
and यहाँ पे it talks about the detectors which are on the libs, because libs is a spectroscope. It's a laser induced breakdown spectroscope which will do the chemical testing over there. And then there is a alpha particle x-ray spectrometer which will do an another chemical like reaction and chemical experiments on the moon. ठीक है. So there was this series of news which followed this snapshot. It was first about the Kasturi Rangan, who applauded ISRO for its journey, and the eyes and ears of this Pragyan are the two cameras, ठीक है, which are installed on this rover only. And this news also about the ambitions which seem to be global in nature, and how the Chandrayaan has played a new paradigm, and it has started a new era in the space exploration of India. Then come to BRICS summit. ठीक है. BRICS summit में, if you talk about this BRICS summit में there was some important developments. First is the President Xi Jinping and Mr. Narendra Modi meeting each other on the sidelines of the BRICS summit. और इसमें जो सबसे important चीज सामने आई है, that is the normalization of relations between the two countries, and this normalization of relations will happen as it was highlighted by Mr. Narendra Modi, that in a conversation he highlighted that the concerns which are unresolved and the issues which are on the LAC line of actual control in the western sector of India-China border areas have to be solved first. Okay. So now we are expecting on the East Asian Summit, okay, East Asian Summit and the ASEAN summits which are upcoming. वहां पे भी they will meet, and in the G20 fold also, and upcoming summits they will meet again, and we will see what the developments come forward. ठीक है. तो इंडिया चाइना का जो रिलेशंस है, इस पे एक ब्रॉड वीडियो आ जाएगा, पूरा इंडिया एंड चाइना रिलेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस एरा, देन दी किंग डायनास्टी. ठीक है. एंड उसके बाद वी विल go through the recent clashes which were there on the border areas, okay, Galwan clash and all, and then what are the other dimensions of this India-China relations when it comes to China and Saudi Arabia, when it comes to China and US trade war, when it comes to China brokering the deals and the acting as a broker between Saudi Arabia and Iran deal, okay, in that video. And in this discussion also, there is a reference about that China acting as a mediator between Saudi and Iran. ठीक है. और वो चीजें भी हम देखेंगे अभी आगे, because this newspaper has been analyzed well, and you will see that आपको न्यूज़पेपर से बाहर जाने की उतनी जरूरत नहीं होती है, but yes, at some point of time you need to do it. ठीक है. और 15th ब्रिक्स समिट का जो पूरा सिग्निफिकेंस है, और 15th ब्रिक्स समिट में क्या क्या और डेवलपमेंट्स थे, वो भी हम इसी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. एंड ब्रिक्स में देर इज एन इंक्लूजन ऑफ 6 मोर मेंबर्स. जितना भी न्यूज़पेपर में आया है, वी विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, एंड देन वी विल गो एंड वी विल डिस्कस द अदर पैरामीटर्स ऑफ ब्रिक्स. It's about welcoming 6 new members. And what are these 6 new members? These are Egypt, Iran, Saudi Arabia, UAE, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना. ठीक है. हाँ, 4 और 2 6, 6 मेंबर्स अभी नए आए. एंड अबाउट दिस ब्रिक्स एक्सपेंशन, and BRICS now a non-Western grouping with the induction of 6 more member nations. What is the significance of this now? This major platform where the developing nations, where the most developing nations, about which the James O'Neill said that they will be the world powers and they will be the world economic powers in 2028. ठीक है. तो इसके बारे में जो बोला जाता है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स एंड हाउ मच सिग्निफिकेंट इज दिस गोइंग टू बी आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ दीज. एक्चुअल में हमारे पास ब्रिक्स में 40 मेंबर्स का जो है आया था. दिस देयर वाज दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम 40 नेशंस, एंड फॉर्मली जो है रिक्वेस्ट दिया था 22 नेशन से ने, और 22 में से ओनली 6 were selected and they were included in this.
अगर आप देखो तो यहाँ पे एक डायमेंशन दिया गया है दैट ब्रिक्स एक्सपेंशन टुक प्लेस डिस्पाइट यूएस एंड यूरोप मूव्स टू आइसोलेट रशिया ओवर इट्स इन्वेजन इन यूक्रेन। ठीक है, एंड इफ यू सी दैट इंडिया हैज बीन टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेंशन, और अगर इंडिया ने एक्सपेंशन के बारे में वोकली नहीं भी बोला, तब भी द इंक्लूजन ऑफ दीज मेंबर्स, उसमें जो पूरा जितना भी उसमें डेलिब्रेशंस हुआ और जितने भी रूल्स बने, ऑल ऑफ दैट India participated very well and India participated actively. That is what has been highlighted here. Plus, this Johannesburg, the presence of a Russian president in this Johannesburg summit was a developmental move because already इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक अपील गया हुआ था कि इनको अरेस्ट किया जाए, बिकॉज देयर शुड बी एन अरेस्ट वारंट विच शुड बी रिलीज्ड अगेंस्ट दिस रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। However, जब आप देखो तो he flew to South Africa and then he attended this meeting, and that is what stands over here, that the non-Western bloc is emerging against the Western bloc, and the Western bloc is seeing and witnessing an erosion in hegemony. ठीक है, erosion of the hegemony. Plus, one more point is here, that is the induction of Iran, as Iran has been under continuous sanctions from United States. प्लस ईरान का अभी दो जगह इंडक्शन हो गया है, एक तो यहाँ पे ब्रिक्स में हो गया और दूसरा ब्रिक्स एंड अर्लियर ऑल्सो एससीओ। ठीक है, तो दैट इज हाउ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज आर एक्टिंग अगेंस्ट द वेस्टर्न हेgemony. Then moving ahead, one more point over here is the acceptance of Iran and Saudi Arabia to the same grouping has only been made possible by the peace deal which was brokered by Beijing. ठीक है, तो Beijing brokered peace deal, and there is one more point that BRICS may increase the chances of UN reforms after this. अब यहाँ पे समझना है इस चीज को, ठीक है, that BRICS expansion in the backdrop of lastly which we discussed earlier was that the expansion of these organizations will act as a thrust for Chinese hegemony to increase in the regional level. कैसे होगा चाइनीज हेजमनी इंक्रीज इस ब्रिक्स के एक्सपेंशन से? बिकॉज ऑलरेडी द मेंबर्स विच आर देयर, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स विच हैव बीन देयर, विच हैव बीन प्लीडिंग out of these 40 members, the members which have been pleading, or out of these 20 members which have been pleading for BRICS expansion, China has been in serious diplomatic relations, and China has been in serious engagements with these when it comes to Iran, when it comes to Saudi और यूएई, है ना? तो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने का मतलब क्या है? दैट दीज थ्री प्लस चाइना will be now having more bargaining power in BRICS negotiations. ठीक है, तो that is how the consensus is developing. However, India did took part in the BRICS summit, and India pleaded for its own national interests, and India pleaded for its role at the global platform. ठीक है, यहाँ पे जो सामने आया, that was about the BRICS nations and about the expansion of BRICS nations, और ये हम काफी बार डिस्कस कर भी चुके हैं, तो लेट्स डिस्कस इट in a bit detail now, that what were the key outcomes of BRICS summit, BRICS 15 summit. ठीक है, तो मेन जो यहाँ पे पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द चेयरमैनशिप एंड
about what is the need actually for this organization, that is the BRICS organization. As I said that अगर आपको इसमें ब्रिक्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है मीन्स में, तो यू नीड टू स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, दैट इज इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इट्स डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स आपको मिक्स करना है, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट विद 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 23% of global GDP, and 42% of the global demography. And after this, the new world order, which is about to set, है ना? What is this new world order? This new world order is aimed to position particularly and assert your own position in relation to United States and European Union. ठीक है, तो यूएस एंड ईयू का जो हेजेमनी है दैट इज डिक्रीजिंग, एंड नाउ इंडिया, चाइना and other nations are increasing. This is setting a new multipolar world order. ठीक है, and this new world order and this new multipolar global order is a balance of this, requires a balance of political and geo-economic interests. ठीक है, as you have seen that how India is balancing itself between West and Europe, between West and East, when it comes to the collaborations about space. तो अगर आप देखो तो Artemis is there, but when it comes to Luna 25, it was earlier decided that Russia will help in Chandrayaan 2, but lately we are now collaborating with USA. But when it comes to defense, we are still under S-400 and all the other regimes. ठीक है, तो when it comes to purchases or economic trade, we are purchasing oil and gas from Russia. ठीक है, तो this balancing of interests on two sides or on the two fronts is there, which is a key feature of this multipolar global world order. Because if it's not multipolar, then what will happen? और अगर ये multipolar नहीं होता या अगर हम balancing नहीं करते, तो then what we have to do is हमें फिर एक ही साइड में चला जाना है. तो this multipolar global order also requires the organizations which were formed post organizations which were the child of post Second World War. ठीक है, and these organizations like World Bank and International Monetary Fund, IMF, these are such organizations which were important, which were holding the current world order till date. But now the emergence of new organizations, new platforms like BRICS, ASEAN, SCO, G20, G7, and organizations like, or the concepts and discourses like Global South, Voice of South, and uh, Summits of Democracy, India as a Mother of Democracy. These are the new discourses which are emerging in this new global world order. These are the things which are discourses, which are or ideas which are getting evolved in this new world order. Then the next point is about de-dollarization and de-dollarization of dollar and internationalization of rupee. As BRICS holds 18% of the trade of the globe, this can be an effective platform and effective organization when it comes to de-dollarization and internationalization of rupee, है ना, plus the discourse of global south and economic rise of India and China. And there are financial structures which are emerging like a new development bank and Shanghai headquarter bank which are emerging. और यहाँ पे
the new fertilizer declaration, which was there for New Development Bank, which was created in 2015 with $100 billion, $100 billion uh, starting capital and starting investment. So that is the point over here, that the institutions and organizations which were created in this post World War order, post Second World War order, are now being under challenge with the emergence of new global multipolar world order, and the organizations and the intellectual organizations or intellectual organisms which will set a new discourse in the new global world order. Okay, so what is the significance of BRICS? So the significance of BRICS is that it's first in person summit or 15th BRICS है ना का सिग्निफिकेंस अगर आप देखो तो इट्स द फर्स्ट इन पर्सन summit since 2019, and this summit, its first in-person summit, and since the Russia-Ukraine war. And the agenda of this BRICS summit was BRICS in Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development, and inclusive multilateralism. Okay. Then participation in dialogues, it was BRICS Africa outreach and BRICS plus dialogue, which was the two dialogues which were set up for this 15th BRICS summit. And the political issues which were discussed over here, this was Russia-Ukraine conflict and post-coup सिनारियो इन नाइजर. ठीक है, एज अगर आपको याद हो तो अभी अगस्त में ही वहां पे कूप हुआ है एंड द आर्मी हैज टेकन ओवर, एंड देयर आर इंक्रीजिंग टेंशंस बिटवीन वेस्ट वर्सेस रशिया, एंड हाउ टू डील विद दीज टेंशंस. ठीक है, एंड ऑन द इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म व्हाट वर द की डिस्कशंस वाज इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज, that is EMDCs. ठीक है, these are gaining more space in the international economic decision making, and there are reforms of multilateral developmental banks and the debt stress of African continent, and there is also African continental free trade area which was under discussion. So these were the points of discussion. And now the BRICS, or the expansion of BRICS, is currently seen as an alternative to G7, that is the Developed Countries Club. And now the BRICS will be the Developing Countries Club, and it's a club now dominated by non-Western countries, particularly South American countries and African countries, and a wider participation of African Union, as South Africa has invited all the African Union leaders who represent the global south for the session on the sidelines of this summit. Okay, so that is how this summit becomes important when we talk about multi alignment and redirectional approach of the foreign policies of different nations which are emerging in this current context. Okay, so let's move towards the next news. And this news came from the nearest of the states of Delhi, that is Haryana. And this news was about a taboo which is there. और ये टैबू किस चीज का है? ठीक है, this taboo is about the phenomena, or this taboo is about the major, or you can say like
When I put it simply, it's a disease in our society, and this disease of setting taboos against intercaste marriages. Okay, as Gandhi ji has promoted this thing that we should practice intercaste dinner tables, and we should practice intercaste uh, brunch, intercaste lunches, and we should practice the movement, and we should practice the mobility between the castes, so that the phenomena of the caste gets eroded. However, agar aap dekho to deep down in the society, the case of here a 28-year-old uh, this guy and a 22-year-old girl, the girl was strangled by her parents in the room, and she was like ruthlessly killed as per the police. ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द फिनोमेना और बिकॉज ऑफ दिस like deep down societal taboo, which is this क्या बोलते हैं इसको हम, honor killing. That is so these points, why am I highlighting these points, is because आप इसको याद रख सकते हो, ये इजी चीज होती है याद रखने के लिए, और अगर आप इस चीज को इंक्लूड करते हो अपने एसे में या अपने एथिक्स के पेपर में as a live case study, because this is just this year only and this thing happened, है ना? तो this is the point जहां से आपके जो मार्क्स हैं वो पुश हो जाते हैं ऊपर को. ठीक है, that's it. Now the next question, this editorial or the lead editorial of the day was about G20's opportunity for an African Renaissance. ठीक है, this came up in the editorial section, and it talked about the Africa as like an absentee landlord. Africa is flagging its demands nowadays on multilateral forums like BRICS, like G20 and UNGA. As this article highlighted here, that Africa में there are problems in Africa. ठीक है, Africa is a dark continent. Africa is like the editorial or the author here highlights that it's a black continent, and the issues of Africa, ठीक है, they are like challenges which are there in Africa are misgovernance, unemployed, unplanned development, ruling tribes का dominance, corruption, Islamic terror, and inter-tribal scrimmage is there, and there is runaway food inflation also, there is urbanization, and youth are unemployed. So these are the challenges in Africa. और अगर आप देखो तो अफ्रीका में the international support has been on erosion. क्यों इंटरनेशनल सपोर्ट वहां पे कम हो रहा है? बिकॉज अफ्रीकाज प्रॉब्लम्स आर फर्दर कंपाउंडेड बाय दिस इंटरनेशनल सपोर्ट बेस. और यहाँ पे अगर इनके नेटिव प्रॉब्लम्स ये हाईलाइट कर रहे हैं ऑथर, यहाँ पे और प्रॉब्लम्स क्या है कि इंटरनेशनल सपोर्ट वहां पे नहीं है फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेज. वाई? बिकॉज चाइना हैज बीन अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इन्वेस्टर, बट a slowing economy and trade have reduced its appetite for Africa's commodities, and its Belt and Road Initiative has raised the debt of the African countries. As the China has been playing the game in other countries also, same is the case here. That China is raising the debt of the countries by investing in them, and then expecting that the countries will pay back, and they will be the forever uh, forever lenders or forever debtors of China. And that is the problem with this checkbook diplomacy. That is the problem with this neo-colonialist perspective, or the, we can say that a new financial colonialism which China is playing. Okay. Then Russia has lately last year involved in Africa with the Wagner Group when it came to the security of the area. However, since last France and UK and other colonial powers as well as United States had exploited the mineral wealth in the Africa, the economic downturn has left them also, and they are also leaving now. And Europe's main concern is limited to stop illegal migration from the African shores now, and it's preventing the migration, or it's preventing the immigration into its own country. Okay? And that is the point where the African problems are getting increased by China, by Russia, and by the European countries and Western countries, Western or the US. So now the author talks about that 15th BRICS summit, which took place in South Africa, and
द थीम वाज ब्रिक्स एंड अफ्रीका। जो थीम हमने अभी यहाँ पे लिखा भी, दैट ओके, हमने वो दूसरे स्लाइड पे लिखा था, दैट इज द अफ्रीकन दिस 15th अफ्रीका, ब्रिक्स एंड अफ्रीका विद द सस्टेनेबल एंड विद द सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। क्या था थीम इसका? थीम ऑफ दिस ब्रिक्स वाज अबाउट, आई गेस इट वाज सस्टेनेबल अफ्रीका ओनली, है ना? अफ्रीकन आउटरीच एंड mutually accelerated growth and sustainable development and inclusive multilateralism. So this multilateralism and the 18th G20 summit, which is about to be held in India in the month of September, that is the 18th G20 summit. At that point of time, also, Africa is expecting that the focus would come up in this G20 summit and upcoming the annual यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीट। दोनों जगह पे अफ्रीका इज एक्सपेक्टिंग दैट वर्ल्ड कंसाइंस विल रेज एंड दे विल लुक बैक टुवर्ड्स द अफ्रीका, और वहां पे अफ्रीका में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कहीं से निकल के आ जाएगा। ठीक है। हाउएवर द पॉइंट हियर इज व्हाट इंडिया कैन डू इन सच सिनेरियो। ठीक है। तो इंडियाज रोबस्ट टाइज विद अफ्रीका हैव बीन देयर since the like historical moments of Mahatma Gandhi, about introducing satyagrah, about introducing Tolstoy farm, and the United Nations, the against the apartheid, and the United Nations peacekeeping role of India, जहाँ पे इंडिया का सबसे ज्यादा contribution है in what, in the peacekeeping forces, in the contribution of the peacekeeping forces. India has been the largest contributor in peacekeeping forces, and in such scenario India का जो trade है, trade has also increased। $98 billion का trade हो रहा है इंडिया और अफ्रीका के साथ। प्लस अगर आप देखो यहाँ पे, तो इंडिया वॉज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका, एंड इट हैज एक्सटेंडेड इट टू 12.37 बिलियन इन कंसेशनल लोन्स जो इंडिया ने पास किए। 42,000 स्कॉलरशिप्स दिए हैं अभी तक 2015 से लेके। दे आर अफ्रीकाज लार्जेस्ट नॉन नेटिव इथनिसिटी विच इज द इंडियन डायस्पोरा विच इज लिविंग इन अफ्रीका। दीज आर द पॉइंट्स यहाँ पे जो इंडिया हैज बीन पुटिंग एफर्ट्स इन अफ्रीका, है ना? तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। However, what next India can do is we can this push for the technologies which have helped India to grow faster, like jam trinity, UPI for corruption and for leakage of subsidies, UPI based payments for cashless transfer, aspirational district programs. These can be replicated in Africa so that the India Africa ecosystem sets an exemplary win-win paradigm for 21st century। ठीक है। तो अगर इंडिया अफ्रीका पे क्वेश्चन आता है तो हमारा इंट्रोडक्शन कहाँ से होगा? हमारा इंट्रोडक्शन ये होगा, दिस विल बी आर इंट्रो। ठीक है। एंड दिस विल बी आर कंक्लूजन। ठीक है। एंड दीज आर द पॉइंट्स which we will highlight with perspective of issues and challenges in Africa। ठीक है। एंड व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ 15th BRICS summit in such case has to be highlighted in a separate heading, that is what are the new steps which have been taken in such scenario for the development of Africa। ठीक है। And how Africa can prosper further। This is a clipping from the opinion based article। This opinion based article was a discussion between two experts which are relevant, which were related to election commission only. And in this opinion, they talk about that the recent bill which was introduced in the Rajya Sabha about the reforms and about the selection panel for the recommendation of chief election commission, chief for the appointment of chief election commissioner। अब यहाँ पे जो अभी बिल आया था, दैट बिल टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, दैट जो पैनल सिलेक्ट करता है या पैनल रेकमेंड करता है नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रहे, बल्कि उस पैनल में रहे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर एज अनदर मेंबर। ठीक है। तो नाउ द डिस्कशन इज बिटवीन मिस्टर ओपी रावत,
who has been associated with Election Commission of India, and he talks about that he, it is mentioned in Article 324 that the parliament has this power to introduce a law, और लॉ नहीं बना था, इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था that there should be a selection panel for this for the process of the appointment of election commission, for the process of the appointment of chief election commissioner. और अगर ये लॉ होता, इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू जुडिशली रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एवरी लॉ, एंड दैट इज द पॉइंट. जब तक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता, अगर उससे पहले लॉ आ गया होता हमारे पास, तो देन सुप्रीम कोर्ट वुडंट हैव गिवन एनी डायरेक्शन. एंड अब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आता है, अगर ये बिल पास भी होता है, दैट टू विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली चेक्ड बाय जुडिशियरी ओनली, and after that constitutional check it will be held that whether it's constitutionally valid or not. Then the question comes that is there any substance to the perception that election commission will now be more amenable to the executive's wishes? क्या अब एग्जीक्यूटिव के अंदर ही ये सब चलेगा? क्या एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले करेगा? तो ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ टू election commissioners. One was Sukumar Sen and another was TN Session, who set exemplary examples who gave the exemplary role, who played their role well, and they set an example of election commission acting as a watchdog of the entire voter base of India and the watchdog of Indian democracy. So, in case there is apprehension after the law is passed, the Supreme Court has the power to judicially review it. है ना? अगर कोई ऐसा apprehension है भी, तो judicial review हो जाएगा और उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा. Why am I discussing this editorial? Is the base that I want to create in you. That is कि आपको ये चीज समझनी होगी that हम किस चीज पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे आंसर में क्या टोन एंड टेनर होना चाहिए. दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक डिस्कशन, ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी डिस्कस इन आवर आंसर्स, दैट इज हाउ वी put points in our answers, that is how our language about the issues gets improvised. ठीक है. So the system of executive appointing the election commission and that too purely from the bureaucracy is not the healthiest practice. ठीक है. अगर ब्यूरोक्रेसी से ही सारे इलेक्शन कमिश्नर्स लेके आए और सारा इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, पूरा रोल उसमें एग्जीक्यूटिव का ही हो, द बिल हैज बीन प्रिपेयर्ड इन कॉन्ट्ररी टू द इंटेंशन एंड रैशनल और जस्टिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट. This is an argument which is given by another person, and this argument is then replied by this OPR, whom I said that he is related to election commission, and he is, I guess, he has retired as an election commissioner member. So the bill says that he says that because the court had asked parliament had not enacted a law, now this bill will have to be debated in the parliament. Whether it's passed or not is the another issue. So the bill is not about that the bill जो लेके आए हैं ये लोग, वो बिल का लाना ही नहीं है contrary to the Supreme Court's judgment. The Supreme Court's judgment has to be awaited after the passage of the bill. Once the bill becomes act, then only it can be checked. Then the question comes कि CEC का सैलरी डिक्रीज करना और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का सैलरी डिक्रीज करना, टेन्योर डिक्रीज करना, क्या ये सब चीजें इन सब ऑफिसर्स को सेक्रेटरी लेवल पे लेके आना, इज इट सेटिंग अ डिफरेंट पैराडाइम? यस, इट्स सेटिंग अ डिफरेंट पैराडाइम बिकॉज इनका स्टेटस थोड़ा नीचे आ रहा है. ठीक है, इनका स्टेटस कम हो रहा है. एज इट हैज बीन सेड दैट सुप्रीम ये इलेक्शन कमीशन, chief election commissioner and election commissioners will be removed as per the procedure of Supreme Court's judges. But election commission जो है, chief election commissioner will be removed through the process of impeachment, but the election commissioners will be removed based on what? They will be removed on the recommendation of the chief election commissioner. So the present policy of this multi-member Election Commission of India, where an existing member is promoted as a CEC based on his seniority. Yes, the author here highlights that yes, this body or the members of this body should have a 6-year tenure, and after having a 6-year tenure, this is correct that they should have a 6-year tenure. And he also highlights here that not only this 6-year tenure should be there,
but they should also enjoy this tenure beyond their age, which is not actually something which could be answered or which could be written in our answer. ठीक है, beyond this age, that beyond the age of retirement they should also hold to the office. That should be done. Yes, till the tenure they should hold the office, and till the tenure they should enjoy the office. Now come to northern sea route, और यहाँ पे the seas which constitute northern sea, for example Barents Sea, Kara Sea, ठीक है, Leptive Sea, and there is this bay, this Oxock, दैट इज लीगल ऑफ ऑक्सॉक, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों हाईलाइट किए, ये बेस क्यों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दीज। वेयर इज मुरमांस्क लोकेटेड? इट्स लोकेटेड नियर दी कोला पेनिनसुला। ठीक है, ये जो स्निप यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द हिंदू। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो दिस ईस्ट साइबेरियन सी और दिस नॉर्थ सी रूट, व्हाट does it travel for, and what is the significance of this north sea route? We will discuss it. What is the significance of Arctic region, and how long India has been doing operations there, and what is the significance of Chennai Vladivostok maritime corridor impact, and other things we will discuss through this editorial. This is very much important for India's security, and when it comes to the expansion and diversification of resources and diversification of the areas from where we can generate our resources. ठीक है, you can also include the dimensions of oil diplomacy here. So it calls for Murmansk, which is popularly called the capital of Arctic region and the beginning point of northern sea route. ठीक है, यहाँ से नॉर्दर्न सी रूट स्टार्ट होता है. दिस इज विटनेसिंग अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द कार्गो ट्रैफिक. और अगर आप देखो तो इन्वॉल्वमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है, 35% हैज बीन इंक्रीज्ड. इंडिया गॉट द लायंस शेयर ऑफ 35% ऑफ 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो which was handled by this port, which is about 2000 kilometers northwest of Moscow. और नॉर्थ वेस्ट रीजन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुरमांस्क है. Why is the Arctic region significant for India? Arctic Ocean, with the North Pole at its center to unprecedented changes in the climate, may have an impact on India in terms of economic security, water security, and sustainability. तो कौन से तीन dimensions है? The dimensions are economic security, water security, and the sustainability. क्यों? बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स का ये रीजन है जहां से अनएक्सप्लोर्ड हाइड्रोकार्बन्स आर देयर, एज वाज हाइलाइटेड बाय श्याम सरन. एंड श्याम सरन सेड दैट 40% of the global oil reserves, global oil and gas reserves could be there, and coal and zinc, coal, zinc and silver reserves can be there. This was highlighted by Mr. Sham Saran back in 2012. और अभी तक इंडिया का आर्कटिक policy of 2022 has also been released, and under this policy what we are doing, our approach to the economic development of this region is guided by United Nations Sustainable Development Goals. तो इस पॉइंट को याद रखना है, that what is India's stand, as I said yesterday also, कि जब भी किसी पॉइंट पे आपको ये चीज क्लियर हो जाए दैट व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन दिस इशू, व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन दिस रीजन, व्हाट इज इंडिया स्टैंड with respect to the policy of dehyphenation when it comes to Palestine and Israel. What is India's stand when it comes to Saudi Arabia and Iran? What's India's stand when it comes to West versus East, China versus Russia, China versus USA, Russia versus USA? तो इंडिया का जो स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू तालिबान, विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे स्टैंड आपसे क्लियर होने चाहिए. एंड दी स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक ओशन एंड दी आर्कटिक पॉलिसी इज दैट वी आर अप्रोचिंग दिस रीजन अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, इस चीज को याद रखना है. अब इंडिया ने अभी तक वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट्स की है? सबसे पहले तो हिमाद्री, विच वी हैव सेट अप इन स्वालबार्ड अंडर द स्वालबार्ड ट्रीटी. ठीक है, India's old engagements are there. सबसे पहली चीज है India's engagements.
with the Arctic can be traced to signing of the Svalbard Treaty in February 1920 and in Paris and India. अभी जो स्वालबार्ड ट्रीटी है ये क्या क्या चीजें रेगुलेट करती है? एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, मरीन, हाइड्रोलॉजिकल एंड ग्लेशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ दिस रीजन। और इन्हीं स्टडीज के लिए वी सेट अप हिमाद्री at Svalbard, and the country has launched its multi-sensor mood observatory also, northernmost atmospheric laboratory, which was set up in 2016. We have launched 13 expeditions which have been successfully conducted. India has also become an observer state of the Arctic Council. सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। एक्सेप्ट अगर आप ये 1920 का डेट याद नहीं रखते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ कम टू नॉर्दर्न सी रूट। व्हाट इज दिस नॉर्दर्न सी रूट? सो द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, और ये रूट कितना शॉर्टेस्ट है? दैट इट कैन डिक्रीज द डिस्टेंस सेविंग्स, ठीक है, टू 50%, कि जितना अभी खर्चा लग रहा है उसका 50% कम हो जाएगा खर्चा। ठीक है, और ये रूट कहाँ कहाँ से होके जाता है? बेरेंट सी, कारा सी, बेरिंग स्ट्रेट और सी ऑफ ऑक्सॉक भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें याद रखनी हो, और एटलस खोल के हर एक सी और हर एक बे को याद रखना है। क्यों बे इसको याद रखना है? बिकॉज ऑलरेडी प्रोविदिनिया बे हैज बिन हाईलाइटेड, कारा स्ट्रेट हैज बिन हाईलाइटेड, और यहाँ के बेस इंपॉर्टेंट है जहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो ये रीजन है ये इतना ज्यादा नॉर्थ में है कि 24/7 365 डेज दिस इज अंडर सी, अंडर दिस आइस, ये फ्रोजन रहता है। तो इस फ्रोजन आर्कटिक ओशियन को फ्रोजन ना रख के नॉर्थ सी का जो रूट है उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए व्हाट्स रशिया डूइंग? रशिया इज यूजिंग आइस ब्रेकिंग असिस्टेंस। what does this mean? This is a nuclear powered icebreaker fleet which Russia is using. For example, FSUE atom float is currently being used, and this is a subsidiary which has a fleet, and this fleet is nuclear powered। और ये क्या करती है? ये वहां का आइस हटाती है, आइस ब्रेकर है ये, और वहां का रास्ता बनाती है। ठीक है, और इस फ्लीट में देर आर 3 more ice breaker fleets which are about to be released in 2000 by 2028. So what are the driving factors for India to participate in this region? Why should India participate in this region? Because if you see that the growth rate of this region or the cargo traffic in this region has been 73%। ठीक है, तो ये डेटा याद रखने का जरूरत नहीं है, बट यस, इंडिया हैज इंक्रीजिंगली और consistently increased its dependence of coal and oil from Russia in the recent years। और इस डिपेंडेंस की वजह से, ऑयल एंड कोल की डिपेंडेंस की वजह से, इंडिया जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से, और इंडिया का जो शेयर है अभी ट्रेड में, जो ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है, दिस ऑल मेक्स इंडिया important, and this all makes this region significant for both to benefit from each other। ठीक है, और in this scenario India has launched Chennai Vladivostok Maritime Corridor, that is CVMC project, which is an outcome of signing of the memorandum of intent between the two countries in September 2019। तो CVMC लॉन्च किया था 2019 में। क्यों लॉन्च किया था? बिकॉज दिस इज वन लिंकिंग विद अनदर to organize international container transit through northern sea route और north sea route। और इस रूट की वजह से, या इस चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर की वजह से क्या होगा? 12 दिन में ही ट्रेवल पूरा हो जाएगा। और ये कहाँ से जाएगा? ये सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट से जाएगा। और ये सारी चीजें आपको, जितनी भी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको आपको एटलस पे मार्क करना है एक एक करके। ठीक है, देन fourthly, what India has done, or what's the driving force for India, is China and Russia gaining collective influence over North Sea region। अब चाइना रशिया अगर कलेक्टिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखा जा रहा है, दैट चाइना और रशिया का कलेक्टिव इन्फ्लुएंस इस रीजन में है, दिस मेक्स अ पॉइंट फॉर इंडिया टू इंटरवीन। ठीक है, और इंडिया का प्रेजेंस वहां पे होना जरूरी है। सो व्हाट इज द पॉइंट विच इज लाइंग अहेड? व्हाट शुड वी डू आफ्टर दिस इज दैट द एनएसआर डेवलपमेंट प्लान until 2035 as approved by the Russian government recently
सेट्स दैट जो कार्गो फ्लीट यहाँ पे चलेगा, जो कार्गो ट्रैफिक यहाँ पे चलेगा, उसका टारगेट इज अराउंड 80 मिलियन टन्स एंड 150 मिलियन टन्स बाय 2030। अब जो ये कार्गो फ्लीट का टारगेट है, दैट इतना ज्यादा ये ट्रेड बढ़ाने वाले हैं इस रीजन में, है ना, दैट इज अराउंड 150 मिलियन टन्स। ये बढ़ेगा ट्रेड। तो इस ट्रेड में इंडिया का कितना स्कोप है और इंडिया का कितना पार्ट होगा इस ट्रेड में, दैट इज वेयर वी शुड फोकस ऑन। और इसी के मतलब इस चीज को देखते हुए दी रोजाटॉम seeks the participation of Indian companies in the projects which are related to NSR. Done. And now moving ahead, and this news, as we highlighted yesterday also, ठीक है, and this news is about G20's trade and investment ministerial meeting which is about to happen in राजस्थान। ठीक है, और ये जो मीटिंग है, this G20 Trade and Investment Ministerial Meeting, this is the third in its series। और पहली मीटिंग जो हमने कल देखा था मुंबई में हुई थी, सेकंड वाज इन बैंगलोर एंड थर्ड इज राजस्थान। और इस मीटिंग में और जो ये जयपुर में मीटिंग होने वाली है, दिस जयपुर इनिशिएटिव, दिस विल फॉस्टर seamless flow of information to MSMEs and will address the challenge of inadequate access to market and business related information which is faced by MSMEs. That is what has been highlighted by Mr. Prime Minister. And he also highlighted the share of MSMEs, which is 60% to employment and 50% to global gross, 50% to around to GDP. And this share of MSMEs is significant, और MSMEs के ऊपर फोकस हैज टू बी देयर, है ना। और एमएसएमई के ऊपर जो बाकी पॉलिसीज है या जो एमएसएमई सेक्टर पूरा है, इस पे जितना भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, चाहे आप पीएलआई स्कीम ले लो, आप सब्सिडाइजेशन ले लो, आप इंसेंटिवाइजेशन ले लो, जितनी भी स्कीम्स है, ठीक है, ऑल ऑफ द स्कीम्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन अ ब्रॉड वीडियो जो आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज वाज अबाउट इंडियन गेमिंग फर्म्स एंड इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। The recent move by the central government was 28% taxation of the gaming, है ना। और अभी कंसर्न्स रेज हो रहे हैं थ्रू द गेमिंग इंडस्ट्री। और अगर आप देखो तो दिस गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, देर आर मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड गेमिंग फर्म्स, जो यहाँ पे हाईलाइट किया है द सीईओ ऑफ ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। ठीक है, एंड ही सेज दैट टैक्स हाइक और की वजह से मल्टीपल कंपनीज जो है दे हैव अनाउंस्ड क्लोजर एंड दे हैव अनाउंस्ड ले ऑफ्स, और उसकी वजह से जो है ये इंडस्ट्री थोड़ा बहुत हिट हो रही है थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपको ना थोड़ा सा याद रखना होगा। क्यों? बिकॉज हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इंटरेक्टिंग एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इन्फ्लुएंसिंग दी व्हाट वी कॉल इज द डेवलपमेंट्स अराउंड द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, और गवर्नमेंट पॉलिसी कितना जरूरी है, और व्हेन इट कम्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ मेकिंग द गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर और नॉट अ रेगुलेटर, इज द पॉइंट जहां पे आपको ये वाला पॉइंट यूज हो जाएगा। और इज द एरिया इज द क्वेश्चन when it comes to minimum governance and minimum government and maximum governance, or making government as a facilitator and not a regulator, इज द पॉइंट जहां पे आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो वहां पे। देन कम्स द मिनिस्ट्री सस्पेंडिंग ऑर्डर mandating the doctors to prescribe only generic drugs। तो recently it was announced by ministry that जितने भी registered medical practitioners हैं, they should registered medical practitioners हैं, they should prescribe drugs only with the generic names। और वो जब prescription दे भी तो उस टाइम पे भी their writing should be legible, and they should prescribe drugs which are rationally they should this describe drugs rationally, and they should avoid unnecessary medication, irrational fixed dose combination tablets। अब इससे क्या होगा? इसका क्रिटिसिज्म आया है जो आईएमए ने किया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, और उनने बोला है कि जब तक अवेलेबिलिटी नहीं होगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, अगर उससे पहले ही हमने ये चीज अडॉप्ट कर ली दैट वी स्टार्टेड प्रेस्क्राइबिंग ओनली जेनरिक ड्रग्स जो कि लो क्वालिटी ड्रग्स हैं,
प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा दैट इंडिया का जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, और हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के साथ साथ जो हेल्थ ऑफ पेशेंट्स है वो खराब हो जाएगी। और अगर आपको देखना हो तो सेम अ बिट सिमिलर आर्टिकल अबाउट द हेल्थ केयर ओनली वाज डिस्कस्ड इन यस्टरडेज न्यूज। और कल वाला जो न्यूज एनालिसिस था उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट वन हेल्थ अप्रोच, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड व्हाई इज दिस वन हेल्थ अप्रोच इम्पोर्टेंट। और अब जो ये क्रिटिसिज्म हुआ है एंड दिस स्टैंड ऑफ बिटवीन नेशनल मेडिकल कमीशन एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वेयर एनएमसी इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करती है मेडिकल प्रोफेशनल्स को, एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिशियंस ओनली, जिसमें डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये हुआ था दैट शुड वी प्रेस्क्राइब जेनरिक ड्रग्स ओनली और शुड वी प्रेस्क्राइब फिक्स्ड डोज ड्रग्स ओनली, and the argument by the voluntary organization, that is this IMA, was that कि जब तक हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी जेनरिक ड्रग्स की, जो कि वी कैन से दैट दीज जेनरिक ड्रग्स आर 30 to 80% चीपर, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि चीप होने के साथ साथ दीज ड्रग्स नीड टू बी अवेलेबल इन गुड क्वालिटी, अदरवाइज दे विल डिटीरियोरेट दी हेल्थ, है ना। तो these are the points and the quality of issue and bioavailability of these generic drugs। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जाम, दैट वाज बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग। एंड व्हाट इज दिस बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग is important because this bioequivalence testing, which was highlighted by NMC's bid to cut links between medical professionals and pharma industry, is sending shockwaves through industry healthcare as, but is this strict approach the solution? Because bioequivalence testing is important because it shows that a generic drug works the same way as the original one tested in the trials, है ना। तो जब आप देखो ट्रायल्स में the drug working or the generic drug and the fixed dose combination, FDC, generic drug versus fixed dose combination, ट्रायल के टाइम पे they might act similar, and the testing between these two drugs on ground level or on the trials, that is called as bioequivalence testing। ठीक है, जो आपको याद रखना होगा। however rules for prescribing these drugs should are not to be remembered। हाँ, जन औषधि केंद्र कौन से हैं? जन औषधि केंद्र are those outlets which give you medicines on cheaper rates। They have generic medicines, and the medicine here are subsidized by the central government। ठीक है। Now come to UPSC mains 2022 GS1 question which was asked in GS1। और ये क्वेश्चन था अबाउट व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी थी जहां पे ज्यादा से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स थे, है ना, उनको रिक्रूट किया गया था, इंडियन सोल्जर्स को ज्यादा रिक्रूट किया गया था, ये क्यों जीत रहे थे ज्यादा, जबकि उनके अगेंस्ट में जो इंडियन रूलर्स की आर्मी थी, जो कि वो भी आर्मी इंडियन ही थी नेचर में, है ना। तो दिस वाज अ फाइट बिटवीन इंडियंस वर्सेस इंडियंस, बट व्हाट वाज द रीजन दैट दीज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी वेर विनिंग एंड दीज अंडर इंडियन रूलर्स वेर लूजिंग, जबकि दोनों साइड से इंडियन आर्मी ही थी, इंडियन लोग ही थे जो दोनों साइड से लड़ रहे थे। तो दिस इज द ट्विस्टेड क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, जिसको आपको समझना है, एंड यू नीड टू गिव रीजंस फॉर दिस। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ दीज आर्मीज। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था? सिंपल, दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंट्रोडक्शन में हम वी विल राइट अबाउट रिक्रूटमेंट ओनली, दैट ब्रिट्स ने इंडियंस को रिक्रूट क्यों किया, क्योंकि कम पैसे पे रिक्रूट हो रहे थे, सैलरी कम थी इनकी, एंड दे फाउंड प्राउड इन ज्वाइनिंग द ब्रिटिश आर्मी। Then, what was the main reason for these armies to win? East Indian armies. First was superiority of military and armament strategy, क्योंकि उनके पास assault rifles थे, उनके पास जो weapons थे, that was modern, that was a bit modernized weaponry। ठीक है। और वो वेपनरी तब डेवलप हुई थी जब ब्रिटेन वॉज फेसिंग वॉर, एंड सेम इज द केस, इफेक्टिव लीडरशिप वॉज देयर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, वेरन हेस्टिंग, एल्फिंस्टोन, मुनरो, ऐसे ऐसे सर आयरकूट और लॉर्ड लेक, आर्थर वेल्सली, प्लस a solid financial foundation
as the East India Company was the first company to raise money from the market, and there was great deal of wealth which was already promised by the East Indian Company traders. There was absence of national pride and unification in the Indian army, or the Indians under the Indian, or the army under the Indian rulers. They were not seeing the political nationalism or the cohesive political nationalism which was behind the fight which they were participating in. Then we will conclude this question with the taxation and other policies of BRICS East India Company, which already have broke down the nerve of Indian armies or the Indians which were the participants of the army under Indian rulers. ठीक है, तो चलो, that's it, I guess, and I wish you all the best from Perfection IAS, and I want you to join our classes which are a free initiative for BPSC 69th, है ना? BPSC 69th एग्जाम के लिए our director Mr. Chandan sir, he will be taking marathon classes from today onwards, और अगर आपको ज्वाइन करना हो तो यू कैन विजिट आवर करोलबाग सेंटर. This is totally a free initiative, and this will help you a lot in your exams. Thank you for joining here. Keep sharing these videos and keep learning. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.